Hello and welcome. My name is Manish Katiyar, Assistant Professor, Axis Institute of Planning and Management, Kanpur. So, we were discussing about the working capitals concepts, and basically our chapter was relating to receivables. Now, we have discussed about credit policy, credit terms. Now, we are moving forward determination of potential credit policy including credit analysis. Here we will take a numerical also, very simple numerical which is calculated. Factor determining credit policies. Which factor determines the credit policy? What is credit policy? Credit policy simply means the company's credit policy. The company's management has decided as a credit terms, credit policies we will discuss here. Each company, each organization may have a different credit policy. We are here just giving you a general overview. In practical situations, different organizations have different credit policies. It depends on the organization's structures, sales, and whether the company in the monopoly market or oligopoly, that depend on, but overall a credit policy. The credit policy is an important factor determining both the quantity and the quality of account receivable. Please focus on quantity. Credit policy means quantity. Quantity of both the quantity and quality of account receivables. Why I am ignoring this quality? I am not ignoring this quality. Quality simply means if we have very sound or reputed customers. Suppose take the examples of Tata Steels. Tata Steel supply their steel product to various auto companies including Maruti, Ford, Hyundai, even Tata. If we, in our client list customers are or customers has a very sound financial background, so this is the quality. Customers having sound financial background, customer having good goodwill in the market. So, here whenever a company does business, normally they do quality checks, and how this quality checks is done? Credit quality checks is done through credit ratings. Here it is essential to discuss about the credit ratings. There are certain credit rating agencies in India also. There are ICRA and CRISIL, two are the major credit rating agencies, and foreign countries E&Y, Ernst and Young, McKinsey's etc. are the credit rating agencies who issue credit worthiness to the individual company. So, here the quality means credit ratings of a company. So, that is why I am here focusing on quantity of account receivable. Basically, though in a larger organization their credit worthiness or their credit ratings are good. So, main focus area is quantity of account receivables. Various factors determine the size of the investment a company makes in account receivables. These are, for instance, the effect of credit on volume of sales. The effect of credit, I have chosen this line with very carefully. The effect of credit. The effect of credit on the volume of sales. Suppose if we are offering credit to our customers, then what we will
receive in return. अगर हम कस्टमर को क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं उससे मुझे क्या फ़ायदा? बिकॉज business is a profit making activity. If we are allowing credit to our customers, so what will customer will return to us? So here the concept is, if credit period increases, so whether the volume of sales is increases or not. If by extending the credit time volume of sales is not increases, why should we offer more credit period to our customers? Okay. So main focus is the effect of credit period. Second one is credit terms. Credit terms means which type or terms and conditions we are offering for allowing credit. Cash discount, we have already discussed about cash discount. Policies and practices of the firm for selecting credit customers, and paying practices and habits of the customer. Paying practices and habits of the customers. Here habit of the customer is core concern. If customers are paying on time, then we will allow the credit. If customers are not paying within the time extended or a credit period, why should we offer them the credit period? So, in this discussion, this point is important, the effect of credit on the volume of sales. If our sales volume increases, we will allow credit terms, but that does not mean that if sales are continuously increasing, we will allow them additional credit. No, this point is to be considered also. Paying practices and habits of the customers also, कि कैसे वो पेमेंट कर रहे हैं इसको भी देखते हुए चलना है हम लोगों को. ओके. नेक्स्ट, द फर्म्स पॉलिसी एंड practice of collection. The firm policy and practice of collection. Suppose in a finance company, the company has grant loan to a person to buy a truck, but he doesn't pay anything. What will company will, sir please payment कर दीजिए. वो कहता है हाँ ठीक है मैं पेमेंट भिजवा रहा हूँ, बट पेमेंट नहीं आ रहा है. तो पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस, आप किस तरह की पॉलिसी किस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, वो आपके इंटरनली मैटर है. वो आपके कस्टमर के बीच में क्या टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड है उसके ऊपर डिपेंड करता है. हमने आपको पहले भी बोला था, वी आर हियर टू डिस्कस अ जनरल टर्म्स. While allowing the credit, you must focus on the policy and practices of the collections. Okay. Suppose that transporter could not pay within a reasonable time, you will talk to him and he positively replies, sir, due to COVID, due to pandemic, our trucks were parked and no activity, no business activity is done during this period. So, in that case you allow him to additional 15 days or 20 days credit period, but after granting that credit period he is still not paying anything. What will you do? You will simply warn him, if you do not pay within time, reasonable time, I will impound your vehicle, मैं आपके वाहन को जब्त कर लूँगा. तो what are the policies depend on the industry to industry. The degree of operating efficiency in the billing, record keeping. Now all the practices is moved from manual accounting to software based accounting. So, delay in the generating the bill, invoice or receipts are the what I am trying to say, I am simply trying to say that while introducing after introducing the softwares, online payment mechanism also, so the updation technique is quite improved. All the data are
which are available is in the updated forms. So, operating efficiency in the billing, record keeping and adjustment functions have becomes the things of past. ये सब पुरानी बातें हैं, अब तो सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं. Collection cost and the bad debts etc. would also have an impact on the size of investment. Suppose there is huge amount blocked with debtors and we have to maintain the data, we have to incur cost in recovering or the amount of credit sales, we have to incur cost. So, the rising trend in these costs would depress the size of investment in receivable. If अगर सपोज हमने किसी को क्रेडिट ग्रांट किया और क्रेडिट सेल्स करी और हमको पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, पेमेंट रिसीव करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है, तो क्या इस तरह की कॉस्ट इनकर करना कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा, लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होगा, उसको एनालिसिस करने के बारे में बात कर रहा है. The firm may follow a lenient or stringent credit policies. The firm which follow a lenient credit policy sells on credit to customer on very liberal terms and standards. Credit analysis. Next topic is credit analysis. Credit analysis, while determining the credit terms, the firm has to evaluate individual customer in respect of their credit worthiness and the possibility of bad debts. Credit worthiness and possibilities of the credit worthiness and possibilities of bad debts. The possibility of the bad debts is calculation of the possibility of bad debts is not possible in advance. आप पहले से कैलकुलेट करके नहीं रख सकते हैं कि bad debts कितना होगा. You can simply assume based on the previous year data, previous year balance sheet, previous year profit and loss account. You can say simply in the last years we have made a provision of 10% on bad and doubtful debts. तो आप उसका एक अनुमान लगा सकते हैं, बट एग्जैक्टली फिगर कैलकुलेट करना इज नॉट पॉसिबल. क्रेडिट रेटिंग, an important task for finance manager is to rate the various debtor who seeks credit facilities. This involves decision regarding individual parties so as to ascertain how much credit can be extended and how long. कितना क्रेडिट दें और कितने समय के लिए दें. In foreign countries, specialized agencies are engaged in the task of providing rating information regarding individual parties. कह रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी कुछ इंडिविजुअल पार्टी, जैसे मैंने आपको बताया E&Y अर्न्स्ट एंड यंग है, एक कंपनी है जो कि क्रेडिट रेटिंग का काम करती है. फिच है, क्रेडिट रेटिंग करने का काम कर रही होती है. ऐसी इंडिया में केयर और क्रिसिल है जो कि क्रेडिट रेटिंग करने का काम करती है. इंडिया भी पीछे नहीं है, अब इंडिया में भी क्रेडिट रेटिंग ज़बरदस्त होती है और जिन कंपनीज़ को अच्छी क्रेडिट रेटिंग मिलती है तो उनकी वर्थ ज़्यादा होती है. सपोज इफ़ Reliance Industries apply for a loan, so whether the banker will check the credit rating of Reliance Industries? Of course not. Next, the finance manager has to look into the credit worthiness of a party and sanction credit only after he is convinced that the party is sound. ही इज़ कन्विंस्ड. कैसे कन्विंस होगा? क्रेडिट रेटिंग को देखे कन्विंस होगा, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे, कस्टमर से बात करेंगे. दिस वुड इन्वॉल्व एन एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पार्टी, मीन्स बैलेंस शीट की उनको स्टडी करेंगे, इट्स रेपुटेशन एंड प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग कमिटमेंट्स. सपोज हमारा एक रेगुलर बेसिस का कस्टमर है तो हम उसकी बैलेंस शीट को भी स्टडी कर सकते हैं. हम देखेंगे कि मेरी बैलेंस शीट में वो डेटर है, लेकिन अपनी बैलेंस शीट जब उसने बनाई होगी तो उसमें हमको एज ए क्रेडिटर शो कर रहा होगा. तो क्रेडिटर्स की पोजीशन क्या रहती है उसको आप देख सकते हैं. द क्रेडिट मैनेजर हैज़ टू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ सोर्सेज टू ऑब्टेन क्रेडिट इंफॉर्मेशन. द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज. किन किन सोर्सेज इंफॉर्मेशन मिल सकती है? ट्रेड रेफरेंस. ट्रेड रेफरेंस मीन किसी दूसरे सप्लायर से पूछेंगे भाई वो कस्टमर किस तरीके का है. बैंक रेफरेंसेस,
credit bureau reports, past experience, published financial statement and salesman's interview and reports etc. These are the basic source from where you can collect the information relating to credit worthiness. Next, once the credit worthiness of a client is ascertained, the next question is to set a limit of credit. Suppose many of our students may be using the mobile phone और some of them may be using the postpaid connection. अगर आप postpaid connection यूज़ कर रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि अगर आप if you are regular in depositing your mobile bill, I am talking about the postpaid customers, if you are regular in depositing your mobile bill, in a specific situation company increases your credit limit. You all may have aware this concept. The credit limit once set can be further enhanced as the favorable experience is granted while dealing with that client. In all such inquiries, the credit manager must be discreet and should always have the interest of higher sales in view of the same time balancing any risk of non-collections. Okay. Next, decision tree analysis of granting credit. Decision tree, एक ग्राफ ड्रॉ किया गया, क्रेडिट वर्थनेस देखेंगे, एक्सपीरियंस देखेंगे, उसके बाद क्रेडिट शुड बी गिवन और नॉट, उसके ऊपर बात करी जा रही है. द डिसीजन वेदर टू ग्रांट क्रेडिट और नॉट इज अ डिसीजन इन्वॉल्विंग कॉस्ट एंड बेनिफिट. अगेन if we are offering if we are offering credit to our customers, then what will we receive in return. हम तो क्रेडिट दे रहे हैं आपको, लेकिन उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, जो मैंने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था. द डिसीजन वेदर टू ग्रांट क्रेडिट और नॉट इज अ डिसीजन इन्वॉल्विंग कॉस्ट एंड बेनिफिट. व्हेन अ कस्टमर पेज, the seller makes profit, but when he fails to pay, the amount of cost going to be into the product is also gone. Because what they are discussing, they are simply saying if sales include cost plus profit, if seller makes, but when the fails to pay, if बायर फेल्स टू पेमेंट, तो क्या प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं, क्या कॉस्ट की लॉस कर रहे हैं. ये कॉस्ट एंड बेनिफिट की बात हो रही है. कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज एंड बेनिफिट मीन्स प्रॉफिट. अगर हम प्रॉफिट लूज़ कर रहे हैं, चलो ठीक है, ब्रेक इवन पे रह रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम प्रॉफिट भी लूज़ करके संग संग हम कॉस्ट भी लूज़ कर रहे हैं, तो ये पॉलिसी ठीक नहीं है. If the relative chances of recovering the dues can be decided, it can form probability distribution of payment or non-payment. Credit evaluation of a customer shows that the probability of recovery is 0.9 and that of default is 0.1. Revenue from the order is 5 lakh and cost is 4 lakh. The decision is to whether the credit should be granted or not. Means अगर 5 लाख की सेल्स कर रहे हैं तो उसमें 4 लाख का मेरा कॉस्ट है, 4 लाख की हमारी कॉस्ट आ रही है, प्रॉफिट 1 लाख का है, तो हम प्रॉफिट लूज़ कर रहे हैं कि कॉस्ट. अगर कॉस्ट एंड बेनिफिट में यही है, कॉस्ट भी अगर लूज़ कर रहे हैं तो हम नहीं अलाउ करेंगे क्रेडिट पीरियड. नेक्स्ट, कलेक्शन पॉलिसीज. एफिशिएंट एंड टाइमली कलेक्शन ऑफ डेटर्स इंश्योर्स दैट bad debt losses are reduced to the minimum and average collection period is shorter. देखिए, average collection period. Again, when you will discuss, when you will study the portfolio management and we do the fundamental checks, that is called fundamental analysis and technical analysis. While doing the fundamental analysis, we simply focus on this. एवरेज कलेक्शन पीरियड. एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना होना चाहिए, शॉर्टर होना चाहिए. इफ एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 50 days, दैट मीन्स कंपनी रिक्वायर्स
working capitals for 50 days. This period is reduced from 35 days. If this period is reduced from 50 days to 35 days, you will simply say कि debt collection period has improved. Working capital requirement हमारी कम होगी. If working capital requirement is reduced, cost of borrowing fund is reduced. Cost of borrowing fund is reduced, profit margin will increase. If profit margin will increase, then obviously EPS will increase. This is the concept. The collection cell of a firm has to work in a manner that it does not create too much resentment among the customer. On the other hand, it has to keep the amount of the outstanding in check. Whatever amount is outstanding with the debtors, we continuously check. Here you are seeing that we simply focusing on the debtors. No one is talking about the creditors. No one is talking about the creditor, क्योंकि वो तो हमको पेमेंट करना पड़ता है, हमको लेना, हम उस पर फोकस कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट. Such procedure must answer questions like following questions: how long a debtor's balance, what should be the procedures, should there be collection machinery, and what should be procedure. All these are the remedies which are available to monitor the payment collection period. Questions. There is a question: Mosaic Limited has current sales of 15 lakhs per year. Cost of sales is 75%, means 25% is the profit. Cost of sales comprise 80% variable cost, 20% fixed cost. Please consider, while the company's required rate of return is 12%, Mosaic Limited currently allows customer 30-day credit, but is considering increasing this 60 days. 30 दिन का क्रेडिट पीरियड बढ़ा के 60 दिन करना चाहते हैं तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी? करंट सेल्स हमारी जो है 15 लाख की है, अगर हम प्रॉफिट क्रेडिट पीरियड बढ़ाते हैं तो हमारी सेल्स कितनी इंक्रीज हो रही है उसको कंपैरिजन करना है. इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट द चेंजेस इन द पॉलिसी विल इंक्रीज सेल्स बाय 15%. इफ वी अलाउ क्रेडिट पीरियड फ्रॉम 30 to 60 days, आवर सेल्स विल इंक्रीज 15%. दैट मीन्स 15 लाख प्लस 1.15 फाइनल फिगर निकल आएगी. While bad debts will increase, if sales will increase, bad debts will also be increased. So this is the solution, and there is a assumption in question already given. Assume 360 days in a year. New level of sales will be 15 lakhs multiplied by 1.15. You may also alternatively you may do like this: 15 lakhs multiplied by, this is S, 15 lakhs multiplied by 1 plus 0.15, or 15 lakh plus 15 lakh into 15 upon 100. ऐसे भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे. तो हमारा सेल्स वॉल्यूम बढ़ के 17,25,000 का आ गया. वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन 80% एंड 75% निकाल दिया. कंट्रीब्यूशन वगैरह सब लोगों ने कैलकुलेट कर दिया. इसको एक टेबलर फॉर्मेट में कैलकुलेट किया मैंने यहाँ पे. कैसे? प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इन डेटर, वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. सर 17,25,000 इंटू 60% और 15 लाख इंटू 15% इक्वल टू 2,10,000 आ गया. बेसिक कैलकुलेशन इसके पहले वाली स्लाइड से हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर करी है. करंट इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स 15 लाख इंटू 60% और 15 लाख 15% 30/360, 30 डेज का क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहे हैं तो 93,750. इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स 2,10,000 minus 93,750, 1,16,250. इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन 15 lakhs का कंट्रीब्यूशन एडिशनल सेल्स हमारे 15% सेल्स इंक्रीज हो रही तो 15 लाख इंटू 40%. न्यू लेवल ऑफ बैड डेट 17,25,000. ये नई फिगर हमारे पास सेल्स की आ रही है. इसको 4% निकाले 69,000 आ गया.
करंट लेवल ऑफ बैड डेट्स, हमारे क्वेश्चन में क्या है कि बैड डेट्स हमारे इंक्रीज हो सकते हैं, तो उनको इंक्रीज यहाँ पे हमने कर दिया। इंक्रीज इन बैड डेट दोनों का टोटल करके हम लोगों ने 69,000 पहले था, इसमें से माइनस कर दिया तो यहाँ पे 54,000 आ गया। एंड एडिशनल फाइनेंसिंग कॉस्ट ये को इंक्लूड करके सेविंग बाय इंट्रोडक्शन चेंज इन पॉलिसी, हमारे पास 22,000 रुपये की एडिशनल सेविंग बढ़ रही है, तो हम इसको क्रेडिट पॉलिसी को अलाउ कर देंगे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। सो इस तरह के कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम आपको अपने बुक्स में मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 3 चीज़ों को फोकस करना है, सेल्स, एडिशनल सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम एट ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्टिविटी, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी फिक्स्ड रहती है, वो चेंज नहीं होती है, इसको ध्यान रखेंगे। उसी बेस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल प्रैक्टिस, यू विल एक्सपर्टाइज इन debt collection period and debt collection policies. Okay, so thank you for being with me.